Hello students, welcome to my channel Aditi Devi's tutorial. As in previous video I have already told you that in next video we will write the structural formula of carbon compounds if their IUPAC names are given. This question is given in our textbook of standard 10th of Maharashtra board in exercise of chapter number 9 carbon compounds. It is printed on page number 134. क्वेश्चन नंबर इज 7 और आज से मोस्टली हमारे वीडियोस हिंदी में ही रहेंगे और कुछ व्यूअर्स ने डिमांड की है कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी. So all the type of students, semi English or English medium students can easily understand it. So आज से थोड़ा मैं explanation हिंदी में भी करूँगी. Now as per your textbook, I have written two examples on board. Paint 21 is the IUPAC name of carbon compound, and if in exam, in board exam, if there will be question for 1 mark in question 1B only, or sometimes in question 1 A maybe in MCQ type questions, if it will be given what will be the structural or its molecular formula of any IUPAC name, but mostly मुझे पता है वो ऐसे वाले क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे MCQ में. हाँ, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन नंबर 2B में या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में any 3 IUPAC names of carbon compounds will be given and you have to write its structural formula. I will suggest you we can write directly also, but mostly go step wise. अगर step wise जाएंगे तो कभी भी फॉर्मूला रॉन्ग नहीं आएगा. यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे विथ नंबरिंग. root name, root word of given IUPAC name of that carbon compound. If you observe, first name of carbon compound is given paint -2-1 और इससे हमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है. अभी देखो, आई हैव रिटन हियर फर्स्ट स्टेप एज रूट वर्ड. रूट वर्ड इंडिकेट विच टाइप ऑफ अल्केन इज यूज्ड हियर. एंड मोस्टली अगेन कीप इन माइंड, अगर IUPAC नेम से रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चन आ गया तो मोस्टली अप टू पेंटेन तक, जिसमें 5 कार्बन एटम्स आर अटैच टू ईच अदर विथ सिंगल कार्बन बॉन्ड, मोस्टली दे आर पेंटेन तक ही आता है, क्योंकि उसके बाद 6 अगर 6 नंबर कार्बन एटम्स अगर 1 by 1 ज्वाइन हो जाते हैं तो उसकी भी चेन बनती है. बट मोस्टली वी ड्रॉ इट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स. तो 10th में कम से कम पेंटेन तक आ जाएगा. चलो, व्हाट रूट वर्ड इज गिवन हियर? द रूट वर्ड इज पेंट. समटाइम्स इट इज पेंटा गिवन, पेंटा. सो parent alkane, we know that first 5 alkanes, methane, second is ethane, propane, butane and pentane. So these parent alkane, therefore I have written here, therefore parent alkane is pentane. चलो, ये तो पता हो गया कि while writing structural formula we have to join 5 carbon atoms as parent alkane is pentane, means 5 carbon atoms. Which functional group is joined here? It is the functional group. Please observe my previous video also, in which I have written all the functional groups with their condensed name. I have written that on board also. Follow that video also again. So here functional group is given here 1. 1 indicate that functional group is as per your textbook. I'll suggest you also follow, or while solving your examples of question number 5 and question number 7 of exercise, please हमेशा सामने आपके रहने चाहिए the table number even 9.16 and one more table with functional group is given in your textbook 9.19. that table always keep in front of you while writing
structural formula or from given structural formula if you are going to write IUPAC name. Please keep in mind, always keep in front of you while studying. On page number 122 of textbook, the table of all the functional groups with their condensed name, whether it should be written as prefix or suffix is also given. Please follow that. If you will follow, no need to explain me. No need to explain here which functional group or what is the functional group is here. I have written functional group condensed name is 1. So this functional group should be CO. So I am writing in front of it. The functional group is CO. चलो अभी वहाँ पे एक नंबर भी लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में, that is 2. To indicate when we are going to write the chain to which carbon numbered atom this functional group is joined. So I am writing which alkane, parent alkane is pentane, which functional group we have to join and the number of carbon atom, that is second carbon atom को. And you can choose any carbon atom by sequence, going from left to right or from right to left. If we number it 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 to any carbon atom from left or from right, second numbered carbon atom को हमें ये CO, that means its condensed name is 1. So here is 2, functional group is CO, parent alkane is pentane. So I am going to write the structural formula of given IUPAC name pent2,1 as: first, show all the carbon atoms according to the R parent alkane. So here parent alkane is pentane and each carbon has 4 valence electron. Carbon is a tetravalent element. एक कार्बन के साइड में ऑल अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे ज्वाइन करने हैं. सो दिस इज 1 2 3 और ये कार्बन का ये हो गया 4th वाला इलेक्ट्रॉन. ये कार्बन को अगर आप देखेंगे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड, मुझे और 2 शो करने हैं. सेम हियर, गो अहेड. लास्ट वाला कार्बन एटम होता है उसके लिए हमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने. नाउ कम अगेन इन आर राइटिंग्स, which functional group we have to join? CO, because its condensed name is 1. To which carbon atom? Second. Go from left to right or right to left. Here I am going to choose the second carbon atom from left to right. So to this carbon atom I am going to join our functional group CO. ये हो गया. बस बाकी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ज्वाइन हाइड्रोजन टू दैट ईच कार्बन एटम. H H, यहाँ पे H, यहाँ पे बैलेंस हुए हैं. CH अगेन H, हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन, यहाँ पे आएंगे 3. एंड इफ यू वांट टू रीड इट, हाउ विल यू रीड इट? आफ्टर दिस अगेन आई एम गोइंग टू राइट इट्स actually structural formula. How will it will be seen? See here, CH3 CH उसको join है CO, बीच फिर से CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आएगा CH3. that means one more time I am going to write its structural formula. Therefore this IUPAC name is of which carbon atom? That is now I am going to write in this way. See, CH3 which is joined to CH. यहाँ पे मैंने CH ही लिखा है सिर्फ. यहाँ पे आएगा CH2, one more CH2 and at the end CH3. But we have to join the functional group CO to this second carbon atom. Now I think you have understood in which way we have to consider while writing its structural formula. See, root word pent.
सो पेरेंट अल्केन इज पेंटेन, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है वन नेम, कंडेंस नेम, सो ग्रुप इज CO and the number of carbon atom to which it is joined is second. So from this I have written this black colored if you can see it, and then we are able to write according to how many hydrogen atoms are joined to it. Now similarly see here one more second example I have written on board, 2-chlorobutane. Okay, the word chloro is always written in as prefix before its parent alkane. ओनली हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ज्वाइन है दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स, वो पेरेंट अल्केन के पहले आते हैं हमेशा, और बाकी जो होते हैं बाकी अदर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर यूज्ड एज सफिक्स, वो पेरेंट अल्केन के नेम के बाद आते हैं. तो ये हमेशा याद रखो कि ये हैलोजन है. वेरी इजी, बट हियर प्लीज फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, try to write in this way. Here I am directly going to write actually the what should be the structural formula like this. Now observe here, which parent alkane is given? Butane. Butane means कौन से नंबर वाला अल्केन आता है हमारा? फोर्थ वाला. मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फोर्थ वाला अल्केन आ गया यहाँ पे. आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल these steps here. I am already going to write only these two formula. Please follow this step afterwards while solving such sums, or not sums I will say, but mostly the IUPAC names. Chalo, now I am going to write its structural formula like this. As there are 4 carbon atoms I have to choose because parent alkane is here butane. Very easy. Which functional group is joined? Chloro. Chloro is its condensed name. Actually what is the chemical formula for that, or what symbol we have to use? That is Cl, not chloro. Chloro is its condensed name, but while joining it here we have to write its actually the symbol of chlorine, that is Cl. Bromo होगा तो Br join होगा, आयोडो होगा तो iodine join होगा, that is its symbol is I, capital letter I. Because if you observe question number 7, one more example is there of IUPAC names. वहाँ पे ब्रोमो लिखा हुआ है. ब्रोमो means Br, its symbol is Br. Similarly here chloro, chloro means Cl. To which carbon atom it is joined? Second. Now it become very easy. चलो I am first join कर देती हूँ मैं second carbon atom को chlorine. You can choose this carbon atom from right to left. सेकेंड कार्बन एटम को भी चूज कर सकते हो, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस सेकेंड कार्बन एटम कैन बी ऑल्सो यूज टू ज्वाइन इट्स फंक्शनल ग्रुप. सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन क्लोरीन टू द सेकेंड कार्बन एटम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बाकी जो बच्चे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो. ये कार्बन है सिंगली बैलेंस हुआ है अभी तक, बाकी उसके 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी तक. चलो उनको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं. सिमिलरली पहला वाला कार्बन एटम उसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ है अभी तक, उसके भी बाकी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज्वाइन कर देते हैं हाइड्रोजन से, ताकि उसके भी चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे. अभी बचा ये वाला और इसका एक बचा है. इस कार्बन को अगर कंसीडर करते हो तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1 बचा है. अगेन उसके लिए ये कार्बन का दोस्त हाइड्रोजन को बुला लो फिर से. नाउ अगेन सेम द थर्ड वाला कार्बन एटम इट इज अगेन नॉट बैलेंस्ड. चलो अपने दोस्तों को बुलाते हैं, फिर से आ गए मदद के लिए. ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 2-chlorobutane. एंड हाउ विल इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला बी रिटन? Therefore it look like this, CH3, second is CH, third is CH2, it look like CH2, और ये बन गया CH3. इसका और एक दोस्त है that is chlorine according to its IUPAC name.
So actually I have not written all the steps like this, but when you solve yourself at home, or when you will do practice writing structural formula or molecular formula from IUPAC names of carbon compounds, then please, while doing practice, follow these steps. Which root word is given here? Root word itself word butane is printed, that is the same parent alkane. So it is the structural or molecular formula for 2-chlorobutane, which is IUPAC name. And there are, I think, 8 examples are given in question number 7. Follow all those. Even I will make some short videos on each and every example of this. Already 2 I have explained. From 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th I will do short videos. Follow those videos also. Okay, till then, tata, goodbye, take care, and please do your studies very concentrately. Okay students, bye.